गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम मुर्तुजा है। शराबी हूँ। ईश्वर की कृपा, आज के दिन इच्छा इच्छा नहीं हुई शराब पीने की। दिस itself for me was a very big thing. Just let me know if my voice breaks off or something. Yeah, we'll do that. No Yeah. worries. मुझे actually I had got the message of this fellowship way back in 2007. My family doctor had told my father कि there is something known as a exactly क्या होता है मालूम नहीं था. Before 2007, I had everything, like whatever a normal person wanted. And आई रिमेम्बर द टाइम मैन जब डैड आउट स्टेशन जाते थे तो उनकी लॉकर की चाबी मेरे पास देके जाते थे, एंड वो टेल मी इन केस यू नीड एनीथिंग टेक इट फ्रॉम द कबर्ड। सिर्फ मुझे बता देना कि क्या लिया है, सो दैट देयर इज नो प्रॉब्लम। आई नो एग्जैक्टली व्हाट इज। एक टाइम ऐसा भी था दैट घर वालों का इतना ट्रस्ट था कि अगर रात को 2 बजे पन आता था तो उनको गारंटी थी कि कुछ प्रॉब्लम करके नहीं आएगा, ये ओके। और फिर एक दिन ऐसा भी आया दैट द कबर्ड्स वर लॉक्ड। बाइक की चाबी, कार की चाबी, सब कुछ ले लिया गया था। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सब कुछ ले लिए गए थे। और यहाँ तक कि देयर वाज अ पर्सन वाज गेटिंग अ मंथली सैलरी, एक बॉडीगार्ड के तौर पे मेरे साथ रहता था। और वो बंदे का सिर्फ एकमात्र काम था कि डू नॉट लेट हिम ड्रिंक। दैट लव फॉर अल्कोहल। एहसास तो हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। आई रिमेम्बर वन डे, ये एक बहुत बेकार एक्सीडेंट हो गया था। आई वाज ऑन माई बाइक एंड आई गॉट एन एपिलेप्टिक स्ट्रोक एंड आई लैंडेड अप इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में पहुंच गया था। व्हेन आई गॉट अप इन द कैजुअलिटी, I was going to get up from the stretcher. Doctor ने हमें just basic सा सवाल पूछा that tell me, are you under the influence or anything? I told him no, I'm not. I was in withdrawals. And when I was getting up, जब मैं स्ट्रेचर पे से उठने की कोशिश कर रहा था, the doctor suddenly said, no, no, lie down, lie down, lie down. You got a wound in your head. We are going to shift you to the OT because you're going to require 8 or 10 stitches. आज भी वो मार थे मेरे सिर के ऊपर और मैं स्कल। आई रिमेम्बर ऑपरेशन थिएटर में लेके गए थे। द नर्स had told me कि एनेस्थीसिया देने वाले। It was not looking like an injection, it was looking more like a screwdriver, and that was given in my head. And I remember screaming with pain. उसके बाद मुझे शिफ्ट किया गया था. They shifted me to a private room. My dad at that time was already 70 years old. I'm an only child. I'm an only child born after 20 years of marriage. My father was the youngest of 11 siblings, and some of my first cousins are double my age. बचपन से ही लाड मिला, प्यार मिला. I was the apple of everybody's eye. काफी सारे अचीवमेंट्स थे. एंड आई रिमेम्बर दैट डे इन हॉस्पिटल जब डैड ने मुझे पूछा था दैट आई हैव टू गो होम, मम्मीज अलोन. माय मॉम हैड सीवियर आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, वॉकर से चलते थे. एंड ही सेड दैट शुड आई कीप अ नर्स और समथिंग फॉर यू. आई सेड नो, नो, नॉट रिक्वायर्ड. आपका जो बंदा है ना, आपका जो असिस्टेंट है, उसको यहाँ पे छोड़ दो. माय फादर डिड नॉट नो दैट ही वाज माय सप्लायर. एंड आई रिमेम्बर कि दे वर रिफ्यूजिंग टू लेट मी सी माय फेस इन द मिरर. जैसे रहा नहीं, चेहरे पे बहुत मार लगा हुआ है. आई मिस माय आई बाय 1/4 of an inch. थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ रहता था, वुड प्रॉब्ली लॉस्ट माय राइट हैंड. और वो बंदा जब मेरे साथ रहा था, रात को हॉस्पिटल में रह रहा था, मैंने टोल्ड हिम कि एक काम कर, यहाँ पे खाना तो हजम नहीं हो रहा है, एक्सीडेंट ही हुआ है ना, तो और कुछ नहीं हुआ है, तो एक काम कर, सामने से जरा टिक्कर लेके आ. मैंने से डैड ने पैसे दिए हो? हाँ है ना.
ऐसे जरा ओपन लेके आना। अरे बाबा क्या बात कर रहे हैं, किधर हो आप, हॉस्पिटल में हो? ऐसे अरे छोड़, मेरे लिए छोड़, तेरे लिए अपन लेके। That neurologist in the morning when he had come could not believe his eyes. He could not believe it. That is it possible that out here he's managed? उसके कुछ समय के बाद एक और हादसा हो गया है, जहाँ पे सवेरे आई वाज हैविंग अ कप ऑफ टी, आई वाज हैविंग माय ब्रेकफास्ट, और वो चाय का कप मेरे हाथ से छूट गया। मुझे दोबारा से फिट आया। एंड आई रिमेम्बर दैट वो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया था, एंड आई रिमेम्बर वॉकिंग इनटू द हॉस्पिटल। उसके बाद व्हेन आई गॉट अप, द रूम वाज एब्सोल्युटली आईसी, इट वाज कोल्ड। My mom and dad came. I could not recognize my mom. And after the doctor said probably dementia हो गया, पता नहीं क्या हो गया, amnesia हो गया इसको, not dementia, amnesia. And I was informed that I was in a coma for 4 days, and chances of survival were very very less. मुझे बताया गया था कि यहाँ पे काफी सारे न्यू कमर्स है। मैंने बहुत सारी गलतियां की है, सिर्फ हो सके तो ट्राई नॉट टू रिपीट दोस। मैंने कुल मिला के 11 साल बाद दारू पिया। ये मैं आके 4 साल मैंने बर्बाद कर दिया, बिकॉज आई वुड नॉट लिसन। मैं वो प्राणी था, was scientific who wanted proof of everything. बिग बुक पढ़ने में इंटरेस्ट था नहीं, स्पॉन्सर ले लिया था। By the time I had come to AA, my history was already 7 years and 3 mental assignments. And यहाँ पे जब मैंने सुना कि यहाँ पे लोग बोलते हैं कि स्पॉन्सर स्पॉन्सर एंड एवरीथिंग, मैंने स्पॉन्सर भी ले लिया था। प्रॉब्लम ये था कि आई नेवर कॉल्ड देम टू लिसन। आई वाज लाइक अ खराई बेबी, सिर्फ रोते रहता था उसको। आई रिमेम्बर माय फर्स्ट AA मीटिंग। मैं मजबूरी में गया था, आई हैड नो विश टू गो ओवर देयर। इट वाज इन 2007, एंड सवेरे डिस्चार्ज होके आया था एक इंस्टीट्यूशन से। एंड आई रिमेम्बर कि वहाँ पे मेरे 3 एडमिशन हो चुके थे 3 महीने के अंदर। और वहाँ पे मेरा जो काउंसलर था, he had come up to me and he had told me कि सुन भैया, हाथ जोड़ रहा हूँ, और रहने दे, तेरे पैर ही पड़ लेता हूँ, पीना मत, और अगर पिया तो दोबारा यहाँ पे आना मत। एंड he had taken that file of mine और उसके ऊपर एक क्रॉस मारा था, एंड he had written no further admission. उस दिन शाम को when I came home, I vaguely remembered कि something about AA they used to talk over there. वो मीटिंग का लिस्ट था मेरे पास। मैंने टोल्ड माय फादर कि ये क्या है, जरा देख के आता हूँ। मुझे ये में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे कोई सोब्रिटी में इंटरेस्ट नहीं था। आई वांटेड टू ड्रिंक। पैसा था मेरे पास। मैं अपने घर से निकला, आई टुक द बाइक, डैड वेरी हैप्पीली गिव मी द की, नो बॉडीगार्ड। पहला स्टॉप था वाइन शॉप एंड सेकंड स्टॉप था मीटिंग। When I landed at that meeting, I remember कि I was so uncomfortable, I was so nervous। मैं बोला यहाँ पे कोई डिक्की खोल के देखेगा तो नहीं। My first impression of ये was 100 चूहे खा के बिल्ली हच को जाएगी। सीनियर सिटीजन का क्लब दिख रहा है। इन द 2007 का मीटिंग, दे वेलकम मी, दैट वाज वन थिंग व्हिच आई लव्ड। काफी अरसे के बाद मुझे कहीं पे कोई स्वागत हुआ था, somebody told me keep coming back. I had come to that point in life where I was not invited to my family weddings. आई रिमेम्बर मेरे मॉम डैड के बीच में आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते थे, लेकिन एक बार एक शादी के, एक वेडिंग का इनविटेशन आया था, मिस्टर एंड मिसेस लिखा था, मिस्टर एंड मिसेस हैंडी, मॉम डैड का नाम लिखा था।
एंड आई हैड कम स्टैगरिंग आउट ऑफ माई रूम, और मुझे बोला गया था कि तुझे भी आना है, लेकिन उनके आंखों से क्लियर दिख रहा था कि बाबा तू मत ही आना। एंड माई फादर had told my mother that I am not going, and my mother said, sorry but you will have to go, आपकी सगी बहन की पोती की शादी है। This had become very common, being left out of functions. I had become totally alone. And in 2007, when I landed for my first day meeting, and people out there gave me the information कि बीमारी है, I rejected it. मैंने outright reject किया, मैं बोला पागल है ये लोग। People started sharing their experiences. They gave me a tip. They said, try and identify, don't compare. वहां पे लोग अपना शेयरिंग कर देते, कोई बोल रहा था नौकरी गई, कोई बोल रहा था छोकरी गई, कोई बोल रहा था इज्जत गई, कोई बोल रहा था शोहरत गई। उन्होंने मुझे जो भी टिप दिए थे, मैंने एग्जैक्टली उसका उल्टा ही किया। आई सैट कंपेयरिंग आउट देयर कि अपनी तो नौकरी गई नहीं है। व्हाट वाज द रियलिटी ऑफ माय लाइफ? हकीकत क्या थी? अरे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ नौकरी नहीं गई है, लेकिन बाबा नौकरी उस आदमी की जाती है जो काम धंधा करता है। आई वाज डूइंग नथिंग। आवर बिजनेस वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन its field in the country. And I remember one fine day, my father had come to my bedroom. He was hunting for some file or something of his. और हमारे घर में बार हुआ करता। We had a concealed bar in the house since 40 years. और मैंने वो बार की डुप्लीकेट चाबी बना ली थी। And my dad found some of his very fancy bottles empty in my drawer. And that day my dad had come to an agreement with me. And he had told me, listen, Sunny, तुझे रोज का पैसा पीने का पैसा मिल जाएगा। अब ये पीने की औकात तेरी बची नहीं है। This was the same father who at one time told me that, if you want to drink at home, I'll make a peg for you. थोड़ा म्यूजिक लगा, थोड़ा एम्बियंस बना, सिप एंड एंजॉय। और वही डैड ने मुझे क्लियर कट बोल दिया कि आज के बाद ऑफिस मत आना। पीपल आर आस्किंग व्हाट इज रॉन्ग विथ हिम। 24 घंटे उसके मुंह में से बात आते रहते। और मैं वहां पे वो मीटिंग में कंपेयर करते बैठा था कि अपनी तो नौकरी नहीं गई। पीपल आर सेइंग कि छोकरी गई। आई वाज सिटिंग एंड कंपेयरिंग, अरे अपनी तो लड़की कोई गई नहीं, अरे जाने के लिए होनी तो चाहिए। माय पास वाज 16 गर्लफ्रेंड्स। माय वाइफ इज नंबर 17। I remember when I was doing my fourth step, I was telling my sponsor, ये पागल थी, ये साइको थी, ये थी, ये थी। It took a long time to realize that बॉस 16 की 16 पागल थे या प्रॉब्लम कहीं और पे था। When I had gone for that meeting in 2007, उसके 6 महीने पहले मेरा ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका था। और मैं वहां पे कंपेयर करते बैठा था कि छोकरी में गई। वहां पे लोग ये बोल रहे थे कि इज्जत गई। I was like, अरे अपना तो बहुत वट है। पीपल स्टिल रिस्पेक्ट मी अलॉट, आज भी लोग सलाम मारते हैं। मुझे ये चीज का एहसास नहीं हो रहा था, ये हकीकत का एहसास नहीं था। I was totally disconnected with reality. कि बॉस, nobody gives a damn about you, तू जिस परिवार से है ना उसको इज्जत देते हैं। एंड शोहरत तो कोई बची नहीं थी, एक मशहूर हो गया था बेवड़ा बन के। ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी फैमिली मेंबर, ईच एंड एवरी कजन, मेरा कोई क्लासमेट नहीं छूटा होगा जिसने मेरे साथ बात करने की समझ नहीं। Like most of the very good problem. In 2007, when I was leaving from that meeting, two old timers walked up to me and they told me, Sunny, if you think that अब तक नहीं हुआ है ना, तो remember it has not happened as yet. अगर तो इसी डायरेक्शन में चलते जाएगा तो एक दिन 100% होगा। I had laughed and walked away from that meeting कि this is a bunch of old fogies। एक ही बात चल रही थी कि पागल है ये लोग, ना ही इनको पीने आया ना ही इनको जीने आया। आई एम नॉट कमिंग बैक। अकॉर्डिंग टू मी इन 2007 मेरा कुछ गया नहीं। आई केम crawling back into this classrooms in 2012।
At that time, according to me, सब कुछ जा चुका. I came into AA also with conditions. And I remember in 2012 when I started listening for the first time. I love this fellowship. मुझे fellowship से बहुत प्यार था. दोस्त मिल गए थे. बाहर की दुनिया में कोई इज्जत नहीं थी. कोई पूछता नहीं था. But one thing which I could not comprehend, I would not comprehend, was the concept of God and the 12 steps. जो चीज मुझे मेरी जान बचाने वाली थी, which was actually going to help me, was the very thing which I was rejecting. In AA, we have the concept of sponsor. सब लोग बोल रहे थे मेरा स्पॉन्सर फलाना है, अपना स्पॉन्सर ये है. I decided चलो सबका है तो अपनापन होना चाहिए. And I started hunting around that who is the most popular guy and who is the oldest guy. Identification गया थे लेने. And I remember that my sponsor, who was my sponsor for a number of years till he passed away. मैं काफी दिनों तक उनके पीछे पड़ा हुआ था. That will you be my sponsor? Will you be my sponsor? And he kept saying no. He said no, I've got too many people. I don't have time. And one fine day he relented. He said, okay, I'll be your sponsor. तो घर पे आ जा. And if you like what you see over there, then we'll take it further. I remember very distinctly. He had told me to come to his house at 5 o'clock in the evening. 10 मिनट पहले ही पहुंच गया था. He opened the door. He had a big smile on his face. और उनके ऑफिस में हम लोग जाके बैठे थे. And he told me that you have asked me to be a sponsor, but I've got some conditions. The first condition which he laid out, will you be honest with me? Do you accept that you got a problem with alcohol? Will you tell me the truth? I want to know the entire truth, not your version of it. दूसरी चीज मुझे जो बताई गई थी, he said, will you keep an open mind? I'm going to tell you what you need to hear, not what you want to hear. मीटिंग में जब सुनेगा तो will you listen? Will you keep your prejudices aside? एंड में करना है कि नहीं करना है, चॉइस तो तेरा है. And the third thing he had told me, that are you willing to do what we did? If you want what we have, are you willing to do what we did? And the next statement which he said, it actually blew me away. उसने मुझे क्लियर कट बोला कि if you are ready for this, then we can talk further. नहीं तो तेरा टाइम और मेरा टाइम दोनों का बर्बाद मत करना. I can help somebody else. I had lost it. मेरा दिमाग सटक गया. अल्लाह साला घर पे बुला के ऐसा कोई बेइज्जती करता है क्या? इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई बात करता है क्या? But some listen to what he's saying. And that is where my journey started. My basic problem was that I was not honest. Honesty आई नहीं है. It came under the lashes of alcohol. लानी पड़ी. I had come into AA with a devious motive. There was a girl I was in love with. I wanted to get married to her. At one point of time, we were engaged. वो एंगेजमेंट टूट गया था बिकॉज घर वालों को मालूम पड़ गया था कि बाबा ये तो क्रॉनिक अल्कोहलिक है. I had come here with conditions. ओपन माइंड तो बिल्कुल था ही नहीं बिकॉज जब मैं मीटिंग में अपन बैठा रहता था when I would be sitting in the rooms over there, I was just sitting and comparing कि अरे यार ये क्या बकवास कर रहा है. वहां पे कोई बंदा बोल रहा है मैंने चोरी की, मैं घर में मंदिर में मैंने चोरी की, मैंने यहाँ पे चोरी की, मैंने वो चोरी किया. मुझे ये रियलाइज नहीं हो रहा था कि बाबा व्हाट हैव आई डन. डैड जब भी ऑफिस से आते थे, व्हेनेवर यू वुड कम फ्रॉम
and change his clothes. Dad would exit the room और मेरी entry होती थी. My hand would go straight inside his pocket. अगर 500 का नोट निकला तो गुड, 1000 का निकला तो वेरी गुड, आई एम ऑल सेट. अरे मैं तो रोज घर में डाका डालता था. एंड आउट देयर इन द मीटिंग आई एम सिटिंग एंड कंपेयरिंग दैट बाबा मैंने तो चोरी नहीं की. आई हैव नॉट डन ऑल दिस शिट. आइडेंटिफिकेशन इसलिए नहीं हो रहा था बिकॉज मेरा मन तो टोटली क्लोज था. आई वाज सिटिंग विद एन एंटायरली क्लोज माइंड. Steps I was not ready to do because ये steps मेरे लिए नहीं है. Fellowship, yes, fellowship I love it, but the steps are not for me. I was not willing to do them. मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि मेरा ईगो. I was always a character who always wanted to know why I should do this. मैं क्यों करूं. मैंने कभी ये नहीं पूछा कि कैसे करूं. I never reached out for help. That was my biggest problem. I never asked anyone that how do I do this. I don't know how to do it. I remember in the steps when it came to fourth step, I was avoiding it for a long time. 6 महीने तक मैं अवॉइड कर रहा था. My sponsor was behind me. Murtaza, right, time to write. फॉर्मेट दिया हुआ था, सब कुछ दिया हुआ था. इट वाज थ्रू द बिग बुक. उसने मेरे केस में तो इनफैक्ट बोला था कि यू नो बाबा जो इन आउट हो रहा था. आई थिंक यू बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप इज यूजुअली अ नॉन वर्किंग स्टेप, बट यू प्लीज डू दैट ऑल्सो. बिल की स्टोरी में से अंडरलाइन कर आइडेंटिफिकेशन और तेरा लिखो. मुझे एक्चुअली बताया गया कि डेली रिफ्लेक्शन किस तरह से पढ़ा जाता है. Because initially when I used to read the daily reflection, it used to make no sense to me. मैं फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ता था और उसके नीचे एक लाइन रहती थी, from wherever that paragraph has been taken. I was told if you really want to understand the daily reflection, pick up that book. वो बिग बुक में खोल, अगर लिखा है बिग बुक पेज 78, गो टू पेज 78, फाइंड दैट पैरा. उसके पहले के 2 पैरा पढ़, उसके बाद के 2 पैरा पढ़. When I came into AA, I was absolutely in a hopeless state of mind and body. Absolutely hopeless, absolutely confused. I remember when unmanageability के ऊपर मुझे लिखने को बोला गया था, I had very truthfully written that all areas of life gone to hell. मुझे आज भी वो दिन याद है. I had found one place in near my house जो सवेरे 6 बजे खुलता था. और मैं कितनी बार वहां पे गया और 6 बजे वो वेटर ने मुझे बोला है कि सर रात की उतरी नहीं, सवेरे सवेरे किधर आ गई. So many times I've gone out there and बॉटल का ढक्कन मुझसे खुलता नहीं था. स्लिप होता था, पतरे का ढक्कन आते थे उन दिनों में. नाउ आई डोंट नो व्हाट कम्स. एंड यू टेल मी नहीं आपसे नहीं होगा, रुको, आई पोर इट इनटू द ग्लास और रखती हूँ. और वो मुझे पिलाता था. एंड देन आई वुड बिकम. बट माय डिनायल वाज सो स्ट्रांग that I am not like them. My own history was showing me something else. When I actually started writing those steps, when I actually started doing it, and when I saw my own history, I'm one of those few namunas जिसको actually मेरे sponsor ने बोला था कि Murtaza, I want you to go into your past. I want you to go through the big book. Start from the very first page and start underlining. और जहाँ पे अपन तुझे आइडेंटिफिकेशन मिलता है, write down your own experience. बिल स्टोरी जब फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ा था, I got a lot of identification. Fear kept me sober for a while. Yes, मैं जो बीच बीच में रुकता था, 2 महीने रुकता था, 3 महीने रुकता था, वो डर के मारे ही रुकता था. But my sponsor had told me very clearly that Murtaza, fear is nothing, it's an emotion. Today it's there, tomorrow it won't be there. What are you going to do then? The glass will come back into your hand. I remember the very first time I had written my fourth step, I had written fear में सबसे ऊपर मेरा डर था अल्कोहल. मेरे दिमाग में वो पावरलेसनेस नहीं घुस रहा था कि मेरे जैसा बंदा है. आई मीन आई हैव डन सो मेनी थिंग्स इन लाइफ, हाउ कैन आई बी पावरलेस ओवर दिस थिंग. Powerless over an inanimate object, inanimate substance, a chemical.
और मुझे बोला गया था कि मुर्तजा, अगर तुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ना, तो व्हाई डोंट यू टेक इट इन अ डिफरेंट वे, दैट अल्कोहल इज मोर पावरफुल देन मी। एक बार उस सिस्टम में जाता है ना, देन इट मेक्स अ मंकी आउट ऑफ मी। वो फोर्थ स्टेप आई अवॉइडेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड द रीजन आई वाज अवॉइडिंग इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बिकॉज अ लॉट ऑफ शिट आई हैड स्टार्टेड रिमेम्बरिंग कि मैंने क्या क्या किया है। उसमें से एक ऐसी चीज थी जहाँ पे खुन्नस में, इन रिजेंटमेंट, आई हैड गॉन टू द एक्सट्रीम ऑफ एक्चुअली गिविंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन समथिंग। मैंने किसी का सुपारी दे दिया था। किस मुंह से बोलूं कि दिस इज द शिट व्हिच आई हैव डन? आई रिमेम्बर माय फोर्थ स्टेप, द फर्स्ट टाइम आई डिड इट। नॉट एग्जैक्टली अ फोर्थ स्टेप, इट वाज अ पाइल ऑफ शिट ओनली। बात ऐसी हो गई थी कि मॉम डैड के साथ घर पे मोनोसिलेबल्स में बात हो रही थी, यस नो में बात हो रही थी। माय गर्लफ्रेंड वाज threatening to leave me. I was 6 months away from alcohol and I was miserable. And I said, चलो लिखते हैं। And that thing was entirely a work of fiction. I mean, it could have become a bestseller. वहां पे मैंने पूरी तरह से जस्टिफाई किया था कि दुनिया ने मेरे साथ कैसे नाइंसाफी की है। आई वाज वन ऑफ दोज इडियट्स जो हर मीटिंग में सुनता था, जहाँ पे अपन न्यू कमर्स रहते थे, कि ऑनेस्टी, ओपन माइंडेडनेस एंड विलिंगनेस। बट आई वाज लाइक, अरे बिग बुक में तो मुझे कहीं पे दिखा नहीं हो। बिग बुक तो ढंग से पढ़ापन नहीं था। मुझे बोला गया था कि डोंट रीड इट, स्टडी इट, इट्स गोइंग टू चेंज योर लाइफ। I found it. In fact, it was pointed out to me. Right at the end of the big book, वहाँ पे क्लियर कट लिखा है, willingness, honesty, and open-mindedness are the essentials of recovery, but these are indispensable. I remember I had freaked out when my sponsor had told me कि ये जिस बंदे के बारे में बात कर रहा था, जिसका सुपारी दे दिया, आई मीन स्पिरिचुअली और कितना गिरना, कुछ बचा नहीं था। आई मीन आई वाज ऑलरेडी अंडरग्राउंड। मैं 4 फीट अंडरग्राउंड नहीं था, मैं तो, माय पिट वाज गेटिंग डीपर एंड डीपर। And my sponsor had to actually explain to me that why I need to do this. He told me, tell me one thing. I said, what? He said, you will have to make amends. I said, have you lost it? You're telling me to make amends. जिस बंदे का मुझे गला दबाने का मन हो रहा है, तो बोल रहा है उससे माफी मांग। He said, Murtaza, amends is not only going and asking for forgiveness. I know, I have heard about your past. I've known your father for 40 years. He's told me what all has happened with you. But it also entails forgiveness. Why are you expecting कि दुनिया तुझे forgive करेगी if you are not ready to forgive them? A lot of shit has happened. Problem ये है कि तुझे what you need, what you are lacking is peace of mind. Can you go to the market and buy 1 kg of happiness? वो तुझे कमाना पड़ेगा. I was told very bluntly that I don't need to do this to impress anyone, to make any fans or followers. I need to do it because मेरे पास मन शांति नहीं थी. I could not look my mom eye to eye. I remember once that she was on the walker and my dad had passed away and she was begging me that don't go out of the house. और मैंने उनको धक्का मार के and she had fallen down and had gone and bought the booze. I remember my relation was so messed up. My aunt, after dad passed away, हम लोग बॉम्बे में कुछ समय रुके थे. We were staying out there for 4 months. There is some tradition in our community which we have to follow. And वहाँ पे अपन, under a blackout, I had passed out without any clothes and everything. And after dad had passed away, my aunt and my cousins and all would come at least once a week from Bombay to Pune. मेरे मासी मुझे कई बार फोन करते थे. मैं हमेशा बोलता था, आई एम ऑन द बाइक, आई एम डूइंग समथिंग, आई कॉल यू बैक. हकीकत तो ये थी कि मैं उनका सामना नहीं कर सकता. मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि ना ही ऑनेस्टी थी, ना ही ओपन माइंड थी, और ना ही विलिंगनेस थी. आई वाज फुल ऑफ फियर व्हेन आई केम आउट.
And I remember that so many times my Masi would call me, my cousin would call me, my Bhabhi would call me. Arey, we've come home, we've already got lunch and everything. Where are you? हाँ साथ में बैठ के खाना खाते हैं. And you know this here out here that एक point आता है when you can't take it anymore. I mean, you cannot imagine life with alcohol or without alcohol. एक साइड पे कुआ है, दूसरे साइड पे घाई है. I remember one fine day, I could not sleep at night. मैं सो नहीं पा रहा. And I told my mom and I told my wife that, tomorrow I'm going to Bombay. I need to meet my Masi. They said, okay, go. I called her my bhabhi, मैं Bombay आ रहा हूँ and I need to speak with her alone. And my bhabhi was shit scared कि मालूम नहीं ये पागल क्या करने वाला है. And I had gone to my aunt. Sitting out there in that room for practically an hour, she was crying and I was crying. Communication was very less. She was already in her 90s. And she just told me one thing that, don't drink. All that baggage which I was carrying, the emotional baggage लेके घूम रहा था, I'm not willing to get rid of it. AA made it very simple for me. My sponsor laid down the steps for me so simply. He said, Murtaza, honesty is nothing but the first step. You honestly admit that your life is unmanageable. The first time he had asked me, I remember when I was like 10-20 दिन हो गए थे और उसने मुझे पूछा था, do you admit your power to solve alcohol? I said, yes, yes. And I said, and what? Your life is unmanageable? I said, are you mad? No, no, it's not. उसने कुछ नहीं बोला था. He just had a sweet smile on his face. The second step he told me was an open mind. He said, none of us came out here ready. कोई भी यहाँ पे नाचते कूदते नहीं आता कि शराब बंद करनी. When I came into AA, I was an atheist. I did not believe in God. मैं एक नास्तिक था. According to me, I was higher power. I was God. बिग बुक में जो लिखा है ना, that applied to me perfectly. I was the director, I was the actor, I was the creator, I was everything. There was one point in my childhood where there was a girlfriend of mine and we wanted to get married. Her family and my family had different ideas. And that time I was ritualist. I mean, अंदर से वो faith कभी था ही नहीं. And maybe that is why it was easier for me because हमारे big book में ही लिखा है कि sometimes faith comes easier to those who never had it. So maybe that was a sense in which I was very fortunate. I was told out here कि ये में एक process है बाबा, came to believe. The second step is talking about that. Are you even willing to believe? Then yes, you made a good start. Made a decision. The third step is talking about made a decision. Am I willing to do that? To hand over what? मेरे लिए it was a headache. I mean, I'm like bloody. एक तो मैं नास्तिक हूँ. I don't believe in God. I used to come for the meetings late and go early. वो serenity prayer मुझे नहीं पड़ता था. मीटिंग पसंद था. But this God funda, I was not liking it. And hand over exactly what? And I was told by practical examples. They said that was nothing, their thinking and their action. Why don't you take it literally? A will, hand over your will. Usually when a person dies, उसके पहले वो एक will बनाता है कि पापा मैंने जो भी मेरी जिंदगी में किया है वो what I want to leave to home. What is writing on that paper on that particular day is thinking on that day. और बाकी का जो है that is a listing of his results. The second step was made very easy for me in the way that I was told that tell me one thing. If you're in an unknown city, अगर मैं चंडीगढ़ पहुंच गया और चंडीगढ़ में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आई नो अनुराग है वहां पे या एपी है, दोनों में से किसी को तो भी फोन कर लूंगा, भैया यहाँ पे आ गया हूँ एंड दिस इज द प्रॉब्लम आई एम फेसिंग, कैन यू हेल्प मी आउट.
Why am I doing that? Because I believe that he's a local and he will have a solution to that problem. That is why I'm reaching out to him. अगर मैं अनुराग को फोन करता हूँ and अनुराग मुझे बोलता है कि why don't you do one thing, यहाँ पे फलाना फलाना तेरे को ये मिल जाएगा ये what you're looking for. That time I said again, and if I need the same thing, I probably will not call Anurag. I will go there directly. But this time I'll be going there on faith. My problem was a higher power, a belief in a higher power. That came to believe नहीं हो रहा. मैंने अपने ये ग्रुप को, ये मेरे इस फेलोशिप को ही मैंने हायर पावर बनाया. The steps were put down to me in a very simple way. He said सिर्फ HOW repeat करते हुए. First step is honesty, second step is open mind, third step is willingness. Fourth step is again fearless and thorough. Again, it's talking about honesty. Fifth step, I was always like that pressure cooker, अंदर ही अंदर वो उबलते जा रहा था. I never wanted to tell my story to anyone. That what is bothering me. Open out कभी हो ही नहीं रहा था. I remember the first time when I had written the fourth step according to me when I was 6 months in a शराब रुकी हुई थी, but I had written it was all bullshit. मैंने कहीं पे ये नहीं देखा था कि where am I responsible. I had done the steps according to my brain, not according to. मुझे यहाँ पे एक टिप मिली थी कि बाबा तेरा दिमाग मत वापर, गधे का दिमाग वापर लेना लेकिन तेरा दिमाग मत वापरना. दैट ओपन माइंड था ही नहीं कि एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई, एटलीस्ट लेट मी शेयर. सिक्स्थ, कैरेक्टर डिफेक्ट्स मेरे अंदर, हैंड ओवर, हैव गॉट रिमूव ऑल दीस डिफेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर. विलिंगनेस थी नहीं बिकॉज देयर आर सो मेनी कैरेक्टर डिफेक्ट्स व्हिच आई लव्ड. अरे अटेंशन सीकिंग, आई लव्ड इट यार. आई केम फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ पॉलिटिक्स. आई ऑलवेज वांटेड टू बी द स्टार ऑफ द शो. सबने पूछना चाहिए. I had to be the life of the party. फिर then भले I might have been on a blackout at that time. There were so many character defects which I was not willing to let go of. I love them. Lust was one of them. Seventh step is a prayer. दिल से कर रहा था कि. I was told again that is honesty. Eighth step, my sponsor had to tell me. Actually, he conned me यार. उसने मुझे पागल बनाया. He told me, अरे बाबा, eighth step open mind रख. We are just making a list. जाके किसी से amends करना नहीं है अभी. Why don't you do one thing? Why don't you write down a list of the easy ones which you can do immediately? फिर उसके बाद एक और लिस्ट बना कि मैं later, and then maybe we can have a list of never. Some amends are so not possible because I lost my father. मेरा एक rock bottom भी था was that ICU में थे. Everyone had told me that you stay at home, take care of mom. That morning I taken it. I said no, मैं तो हॉस्पिटल जाऊंगा ही जाऊंगा. एम्बुलेंस के पीछे निकल पड़ा बाइक पे. हॉस्पिटल पहुंचा ही नहीं. रास्ते में वाइन शॉप दिखी, डरा हुआ था. I said, well, I'll take 190, I'll feel better. I never reached the hospital. Next day morning, my mom informed me that dad is in ICU, intubated. Yeah. 10 days later, when I lost my father, I was in a blackout. When my mom had fallen sick, she was bedridden for 1.5 years. मेरी फट गई थी. I was like, for my dad, I was not able to do anything. And that time, alcohol had stopped. Entirely by God's grace, at that time, I was sober. I had worked the steps. And my sponsor never failed to remind me कि मुर्तजा तुझे जो मौका मिला है मॉम की सेवा करने का, हम लोग को नहीं. We had nurses at home and everything, and my wife told me that these people are not really taking care of mom. If you are willing to help me, morning I'll take care of it, evening you'll take care of it all. I changed my mom's diapers for a year and a half. I am an alcoholic. That pride would come. गुस्सापन आता था because mom
You tell me you did not feed me. I said, I just fed you. And a lot of AA members would be coming home and they would tell me, मुंह बंद रखना. तू कोई मेहरबानी नहीं कर रहा है तो अपना फर्ज अदा कर. Your mom is doing this. I remember one day, my wife came up to me. She said that, tell me one thing now, it's been a couple of years. You've been making meetings. You're sober. When are you going to make direct amends to your mom? मेरी फट गई थी. I'm telling you the truth. How shit's dead. I said indirect amends तो किए है. She said no, forget the indirect. When are you going to open your mouth and say sorry? When are you going to ask for forgiveness? She said you come with me and I'm going to be standing next to you and you have to do this. My sponsor used to come home every 2 weeks, 3 weeks. Pune के काफी old timer थे, वो सी करते थे. And I remember that day I was standing next to my mom and I asked her, like, Mom, I've troubled you a lot and I'm sorry. मॉम ने एक शब्द नहीं बोला था, उनके आंख में से आंसू बस सिर्फ निकल गए. मैं मेरे जिस मासी की बात कर रहा था, मम्मी के बड़े बहन. She had gone deaf. She passed away at the ripe old age of 99. जब बॉम्बे जाके उनके साथ अमेंस किया था ना, आफ्टर दैट वी वर हैविंग वीकली टॉक्स. एवरी वीक विदाउट फेल उसका फोन आता था. अगर उसका नहीं आता था तो मेरा फोन होता था, या तो मैं बॉम्बे पहुंच जाता था मिलने से. Half the time what she would say I would not understand, and I doubt even she understood what I could, because उसको शायद सुना ही नहीं था. लेकिन ये had shown me ये प्रोग्राम की ताकत क्या है. The people who I had loved the most are the people who have hurted. मैं वो नमूना हूँ जो वाइन शॉप पे पहुंच गया था, पापा कोई उधारी तो नहीं बाकी है. वाइन शॉप वाले ने मुझे भगाया था वैसे. अरे भाग ऐसे. अरे रुक गई है ना, वापस क्यों आया यार. लेकिन द पीपल हु एक्चुअली मैटर, बिकॉज यहाँ पे बोला जाता है रिकवरी बिगिंस एट होम. 10 स्टेप. मैं वो पागल हूँ, 4th स्टेप करने के लिए तैयार नहीं था. और डीलिंग इट एंड डीलिंग इट. नतीजा ये था कि 4 years I was in and out of this solution. And I was justifying, because another one of my character defects is perfectionism. एक ही बार करूंगा और परफेक्टली करूंगा. ये चीज दिमाग में बैठ नहीं रही थी कि भैया देयर आर सो मेनी इंसिडेंट जो तुझे याद भी नहीं है, जो ब्लैकआउट में हुए. सो मेनी इंसिडेंट स्टार्टेड कमिंग. years I started remembering, अरे ऐसा भी हुआ था. Some of my friends started telling me, do you know that you had done this also? तूने ये भी किया था. I started out with those amends lists, with the immediate ones. जिस बंदे की बात कर रहा हूँ, जिसका मैंने सुपारी दे दिया था. My sponsor had told me that, pray for him, even he was sick man. He did not tell me anything which was out of the big book. जो big book में था वो ही पता है. He said that, ask for him whatever you wish for yourself. प्रार्थना दूसरों के लिए की जाती है, खुद के लिए नहीं. मैं तो लिस्ट ऑफ डिमांड्स लेके बैठ जाता. इतनी पण अक्कल नहीं थी मेरे में. God, I want this, I want this, I want this. अरे thank you for keeping me sober today. Thank you for giving me this beautiful fellowship. Thank you for giving me this platform where I can openly share, where nobody is going to judge me. मुझे ऐसे दोस्त मिल गए जिन्होंने अपने घर खोल दिए, उनके दिल खोल दिए मेरे लिए. My sponsor gave me almost 4 to 5 hours every week for 10 years of his life. मैं कर रहा हूँ क्या किसी को आज. 10 step. I was like, अरे 4th step हो गया ना. I remember one day, like an idiot, I had asked my sponsor that, अच्छा tell me, this is a one time affair ना, ये प्रोग्राम एक ही बार करना है ना. उसने बोला, yes, you have to do it only once every day for the rest of your life.
10 step he had emphasized to me. Murtaza out there, वहाँ पे लिखा है promptly admitted it. Because I'm a alcoholic like me is also a sadist. I was a very sarcastic human being. टॉन्ट मारने में बहुत मजा आता था. मालूम था अंदर. आई न्यू इस साला बोलूंगा ना सामने वाले को बहुत चुभेगा. And that used to give me a kind of a sadistic pleasure. And one of the biggest tricks which I had got was learn to keep your mouth shut, especially when you're angry. I remember वो हॉल्ट की बात करते हैं. मेरा जो इमीडिएट बॉस था ना कंपनी में आई वाज वर्किंग, उसको और मेरा जमता ही नहीं. He always had a problem with me. I always had a problem with him. My friend was the owner of the company करके चल रहा था. And I told him that probably today I'm going to quit or he's going to fire me. He said right now it's 12 o'clock. Let him. You had your lunch? I said no. He said खाना खा ले then go. These are all things which are new to me. I was the idiot with a closed mind. My open mind. मैं किसी की बात सुनूं वैसा प्राणी था ही नहीं. ऐसे चल ठीक है ये अपन ट्राई करता हूँ. I went up there. I saw that okay, this fellow has eaten inside his cabin. I went and spoke with him. I told him exactly what my problem is. He told me what his problem is. उस दिन के बाद कोई प्रॉब्लम ही नहीं. After that we were good friends till he actually left the organization. The 10th step was told to me that Baba, that is again honesty. Review your day thoroughly. There are times when जब तू गलती कर लेगा, you are bound to make mistakes. You are human. You are not God. 11th step is again an open mind. HOW, 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 HOW. उसके बिना ये प्रोग्राम हो ही नहीं सकता. Having had a spiritual awakening, पर्सनालिटी चेंज की बात होती है. बिग बुक बोलता है a personality change sufficient to recover from alcoholism. Spiritual experience or a spiritual awakening. Am I willing to do what others did for me? My sponsor's last words for me was pass it on. He was the one who forced me into service. गलती से मैं आ गया था जीएसओ का ऑनलाइन जब the conference was going on. Somehow I landed up over there. And my sponsor had asked me that, how did you like it? I said, yeah, it was good. He said, you didn't get bored? I said, no, I didn't. He said, okay, I'm going to ask you something. It's payback time. Are you willing to go into service? Honesty, open-mindedness, and willingness. These three things, if I do it honestly, my life has changed. मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था नहीं आज भी है. उसी की कंपनी में मैं जॉब कर रहा था. आई डिड माई फर्स्ट जॉब एट द एज ऑफ 36. एंड he had told me that okay now since your family business तेरे को वहाँ पे नहीं जम रहा है तो why don't you join me. And he asked me what field are you interested in, marketing, sales, land acquisition क्या है. It was a construction firm. And I said कि हाँ मुझे I'll do this particular thing. और वहाँ पे मुझे एक साइट सौंपा गया था. It was about 40 kilometers from Pune and I used to go every day. And one day while going ना वो दिमाग की घंटी बज गई थी. Because my priorities were messed up. My sponsor was telling me, my friends in the fellowship were telling me, मुझसे तो जॉब मत कर अभी, तेरे खाने के वांदा नहीं है. Give your recovery some time. I was a people pleaser by nature. ना ऑफिस तो शाम को 6 बजे बंद हो जाता था. मैं रात को 10 बजे घर पे आता था. वाह वाह चाहिए थी ना सर. नतीजा वही हुआ कि एक दिन साइड पे जाते जाते दिमाग में एक विचार आया कि एक 90 पी लेता हूँ. I've got a long drive ahead of. The next thing I know, I woke up in my bedroom on my bed. When I came out in the living room, my best friend was sitting out there, my parents were sitting out there, सबके मुंह लटके हुए.
मुझे बताया गया था कि ऑन द एक्सप्रेस हाईवे, ऑन द बैंगलोर पुणे एक्सप्रेस हाईवे, एट द टर्न यू हैड गॉन इनटू अ ब्लैकआउट। तेरा सिर हॉर्न के ऊपर गिरा होता, दैट हॉर्न वाज ग्लेयरिंग। द कॉप्स हैड टेकन यू एंड टेकन यू टू द पुलिस स्टेशन। वहां पे मुझे फोन आया, दिस वाज फ्रॉम योर कॉल हिस्ट्री एंड दे कॉल्ड अस एंड आई केम आउट देयर, आई पेड हिम 1000 रुपीज एज अ ब्राइब। तेरी कुछ बोतल थी वहां पे। आई टुक दैट एंड आई एम्प्टीड दैट। पुलिस वाले ने मुझे बोला, अरे सर फेंकी, और मुझे कम है जाएगा। एंड माय फ्रेंड टोल्ड मी दैट ओके फॉरगेट इट, जो हो गया हो गया। आई टोल्ड हिम, टेल मी वन थिंग, मेरी कार कहाँ पे है? वहीं पे है क्या? इसे नहीं नहीं, आई आई ड्रोव योर कार। मैं बोला, यू ड्रोव माई कार, तो तेरी कार कौन चला के लेके आया? उसने बोला, अपना मेरा पीए और सेक्रेटरी था ना, ड्राइवर कौन था? बोले, यू मीन टू से एवरीबडी सॉ मी इन दैट कंडीशन? अरे वो छोड़, तू आ जा ऑफिस पे, 2 दिन आराम कर, एंड द थर्ड डे यू कम बैक। माई फर्स्ट जॉब। आई नाइदर रिजाइंड नॉर वाज फायर्ड, आई सिंपली स्टॉप गोइंग। क्या मुंह लेके जाओ? वो कंपनी के डायरेक्टर का बेस्ट फ्रेंड बेवड़ा है, पूरे ऑफिस में मालूम पड़ गया। एंड दिस वाज द गाय विद हु आई यूज्ड टू गो फॉर लंच एटलीस्ट वंस इन अ वीक। हम लोग जाते थे। कई साल के बाद उसने बोला कि तो वो बार में बैठे रहता था, टल्ली हो जाता था, एंड आफ्टर वन पॉइंट आई वुड एक्चुअली थ्रो अवे द अल्कोहल। उसको बोलता था सोडा और नींबू पानी और वो कोको कोला डाल, इसको मालूम ही नहीं पड़ता था, यू वुड एक्चुअली नॉट नो, यू वुड बी दैट हाई। He kept calling me for a number of years, and it was one of my biggest regrets. I told my sponsor that एक सच्चा दोस्त है, and I don't have the guts to face them because मेरे कारण उसकी कंपनी में उसकी बदनामी होती है। What do I do? And when my mother was not well, and he used to keep calling me, he used to call me every week, and I used to avoid the phone call, या तो उठाता नहीं था या तो उसको बोलता था I'm busy, I'll call you back, and I used to call back. This went on for 2 3 years. शादी हो गई थी, शराब रुक गई थी, mom was not well, and one fine day I was sitting with my sponsor. It was a Saturday, and my wife called me, you keep talking about Pritam, and he's come home. I always wanted to meet him. और वो घर पे आया, he's sitting with mom, come first. And I told my sponsor that he's come home. And my sponsor told me, you know what you have to do. You've been in the program long enough. And that day when I came and he asked me that, what are you doing nowadays? I said, not doing anything. He said, right now you take care of mom. I said, do you have an opening out there? He said, अरे forget that. वो तो सिर्फ इसलिए था ताकि तू हमारे नजरों के सामने रहे, मर नहीं जावे. Got something better for you. When my mom passed away, he was with me at my side the entire time. और जब उस दिन जब वो आया था ना घर पे, I remember telling him that I need to talk with you. और हम लोग टेरेस पे गए थे और हम लोग ने बात की थी. And I told him that because of me all this has happened, and I'm really sorry about this. He is my best friend. We've been friends since the age of 14. 30 years का friendship. मैंने उसको आंख में आंसू आज तक नहीं देखे. His sister had become a widow at the age of 21. Even then he had not cried. But that day he had tears in his eyes. जिस चीजों से मैं भाग रहा था, जिन लोगों से मैं भाग रहा था, that company where I stopped going, they were kind enough never to fire me or to bother to ask for my resignation. When mom passed away, आज वही बंदा मेरा पार्टनर, तब उसका जो पीए था आगे जाके मेरा पीए बना, जो उसका सेक्रेटरी था आगे जाके मेरा सेक्रेटरी बना. Those promises came true in my life, but they only came true. Honesty आई नहीं, लानी पड़ी, and it came under the lashes of alcohol. Open mind, willingness is very easy to say. My sponsor always used to tell me that Murtaza, you are working through this. I don't know whether I've done justice to the topic that I've tried to do.
So thanks for letting me share. Thank you.